लिए आपके सामने एमसीक्यू लेकर हाजिर हैं स्टूडेंट। ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो इम्पोर्टेंट आपके ये आप मिड टर्म के एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल आएंगे ये होंगे जो आप अगर ये तैयार कर लेते हैं। चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर टू डायमेंशनल अरे ऑफ फ्लोट डाटा टाइप। तो फ्लोट के लिए ये वाला ये रेड में आप देख रहे हैं फ्लोट ए अरे 2 into 2 टू डायमेंशनल अरे के लिए ये ब्रैकेट ये वाली आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी यूज टू इंक्रीमेंट दी वेरिएबल एक्स इज। इसमें प्लस का साइन जो वेरिएबल से पहले है वो नहीं यूज़ होगा। विच कैन ये यूज़ नहीं हो सकता। बाकी ये जो है इंक्रीमेंट करने के लिए ये ऑपरेटर ये बाकी ठीक है। डिटरमिन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग वाइल लूप। ये वाइल लूप है, इसकी आउटपुट इन्फिनिट होगी। What will be the result of arithmetic expression 6 plus 27 divided by 3 into 3? 33 इसका आंसर होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है तो एक्सप्लेन करने में मुझे यार एक को टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन और उनके आंसर बताता जाता हूँ। एक्सप्लेन किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द नंबर 5544.53 मस्ट बी स्टोर्ड इन फ्लोट डाटा टाइप। क्योंकि ये इसमें पॉइंट आ गया ना तो ये फ्लोट में आएगा। Which of the following is the correct way to initialize the variable x of int type with value 10? करेक्ट सिंटैक्स इसका ये होगा int x वेरिएबल x इज इक्वल टू 10। 10 से इसकी वैल्यू हम उसे इनिशलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइज ऑफ द फॉलोइंग अरे। 4 स्ट्रिंग ए बी सी डी एस, इसकी क्या साइज होगा 3 है इसका साइज। Let ptr1 and ptr2 are pointer variables that points to integer data types. Then which of the following arithmetic is allowed? ptr plus ptr1 plus ptr2. A variable declared inside a code block becomes local variable for that block. उस ब्लॉक के अंदर के लिए वो लोकल होगा। फ्रॉम द गिव ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। ये कोड है, ये वेरिएबल एक्स की वैल्यू 5, एक्स की 4 आउटपुट है और इसकी ये आउटपुट 5 होगी, 4 होगी, 4 होगी, 5 होगी, तो 4 इसकी आउटपुट होगी। What will be the correct syntax for initialization of a pointer PTR with string programming? तो इसका आंसर है करेक्टर पॉइंटर character static pointer is equal to programming. Correct the errors from a program is termed correcting the errors from a program is termed as debugging. In C++, when two programs A and B are trying to open a file xyz.txt at same time, then इसका आंसर मेंशन नहीं किया हुआ, चलें इसे छोड़ देते हैं। A convenient way to implement random access files is by using only, इसका भी आंसर नहीं है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। ए फंक्शन राइट का ये फंक्शन है टेक्स, अच्छा इसका भी आंसर नहीं है, सॉरी स्टूडेंट, इसको मैंने चेक नहीं किया। नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज़ द पॉइंटर विच डिटरमिन्स द पोजीशन इन ए फाइल फ्रॉम वेयर द टेक्स्ट नेक्स्ट रीड ऑपरेशन अकर। सीक इसका आंसर है। द फंक्शन टेल जी returns the current location of the seek g pointer. Identify the error in the given code segment and give the reason of the error. Num1 plus plus, this is an increment operator and not used here. Suppose there is a pointer static sptr to structure student. Write down two methods of accessing data member's name with sptr. Static sptr is equal to and student और student string, ये दो उसके मेथड्स हैं।
Explain the logic of the given program code and also determines its output. ये कोड है, ये इसकी आउटपुट है, वेलकम। अच्छा स्टूडेंट, वैसे तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है ये सब्जेक्टिव में भी वो दे, ये कोड दे के या कोड में कुछ चेंजिंग करके कहें कि जी इसको कोड को करेक्ट करें या इसकी आउटपुट बताएं, तो ये उसमें भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी ये आ सकता है ये। तो ये आप इसको, ये कोड वाले जो हैं इनको अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। ये कोड है, इसकी ये है आंसर। ये इसमें हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आउटपुट 2, 4 और 10 होगी। ये फर्स्ट पेपर हो गया। अब सेकंड पेपर पे चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू गेट 256 फ्रॉम द नंबर 2568 वी डिवाइड दिस नंबर बाय 10 एंड टेक इट्स क्वोटिएंट। The correct sentence to do while loop is while condition semicolon do bracket statement semicolon, इस तरह से ये इसका होगा। ये which of the following function is included in stdlib.h header file, 1 and 2 only। ये दोनों जो हैं डबल एटॉप और इंट, ये करेक्टर वाला नहीं होगा इसके अंदर। If the break statement is missed in switch statement, then no effect on program। The data type before a function name represents its return type। Member function tell g returns the current location of the dash pointer, get pointer। What does 5 or 6 evaluate to in decimal where और इज बिटवाइज और ऑपरेटर? 5 इसका आंसर है। सी इज वाइडली नोन एज डेवलपमेंट लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन 6 + 27, इसका प्लस डिवाइडेड बाय 3 × 3, तो इसका 9 आंसर है। How many bytes are occupied by declaring following array of characters? Character string programming 12 आंसर है इसका। इसमें ये 12 डिजिट 12 लेटर्स हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका अरे का जो साइज़ है करेक्टर सब 12 है। व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर पीटीआर विद स्ट्रिंग programming, character PTR programming। What will be the result of expression x modulus is equal to 2 if x is equal to 7, x is equal to 3 answer? Unix has been developed in C language। Declaring structure does not mean that the memory is allocated false। What will be the value of I and j in the following code segment? ये कोड है, ये i और j के दो वेरिएबल हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं i is equal to 4 और j is equal to 8। When an array is passed to a function, it is passed by data type। What is, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, what is the difference between switch statement and if statement? Why we close a file after use, ये भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। A two-dimensional array has 3 rows and 4 columns. Write down the syntax to initialize first element of all 3 rows of two-dimensional array with value। ये एक और क्वेश्चन सब्जेक्टिव। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट एंड गिव द रीज़न। इसका रीज़न बताना है एरर्स। Can you use an assignment operator to assign the value of one C string to another? Next question, why binary search algorithm is more efficient than linear search? Write down the output of the code given below। ये अब नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम। ए कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज इज रिटन इन सी लैंग्वेज। Initialization of variable at time of definition is good programming।
If structure, the block statement is executed only when the condition is true. Which of the following function is included in stdlib.head header file? One and ये दोबारा रिव्यू हुआ first or second option. Dealing with structures and functions passed by reference is the most economical method. True. Point Pointer is a variable which store memory address. Processor program perform its function before compiling phase take place. Which of the following cannot be a variable name? 10 area. Which looping process is best when the number of iteration is known? While. Which character is inserted at the end of string to indicate the end of string? Null. How many bytes are occupied by declaring following array of characters? Character string programming 12. Which of the following header file defines the rand function? stdlib.h. Commenting the code makes a program easy to understand for others. What wrong with this for loop? ये for की एक लूप है, इसका ये है आंसर. द कॉमर्स शुड बी सेमी कॉलन्स. ये कॉमा नहीं होंगे, यहाँ पे सेमी कॉलन आएंगे. ठीक है. एक मिनट. For which array the size of the array should be one more than the number of elements in the array? Character की जो array होगी उसमें one more होगा. अच्छा जी, ये subjective question. To which category of software compiler and interpreter belongs? Next question. What is the result of the expression? ये expression इसका result या output क्या होगा? Write a declaration statement for an array of 10 elements of type float. Include an initialization statement of the first 4 elements 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Write down the output of the following code. What will be the output of the following code segment C++? ये कोड है, इसकी आउटपुट बतानी है. फिर राइट सी प्रोग्राम डिटरमिन. इस क्वेश्चन को चलाने दें. नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है इस पेपर का. Which of the following is the correct statement for the following declaration? PTR is a constant pointer to int. Variables which hold memory addresses are called pointer variables. If num is an integer variable, then num pointer is equal to 4 means to multiply 4 with num and assign the result to num. For question x pointer is equal to y plus z is an arithmetic expression. When it will be evaluated by the compiler, it will be equivalent to x is equal to x pointer y plus z bracket close. Which of the following is the correct way to initialize the variable x of int type with value 10? Int x is equal to 10. Which of the following is correct way to input two values from keyboard? C in variable 1 variable 2. इस तरह ये वाला कोड सही है. Reusing the variable in program helps to save the memory. Suppose a program contains an array declared as int array 100. What will be the size of the array? Size 100 ही होगा इसका. Which of the following is the correct function call having array named student of 10 element as a parameter? Add record student 10. Application software are used to solve end user problem. When an argument is passed by reference, a variable is created in the function to hold the argument's value. Body of any function is enclosed within a curly bracket. The functions that have already been identified as a part of the language are called built-in function. Correcting the error from a program is termed as debugging. The file open mode IOS out is used to open a file for output and move to the end of the file. End line is used to check for the end of file when a file is being read. The end line. To access the data members of structure, dot operator is used. The Microsoft Word document doc is a kind of binary access file. The data size of the file is always greater than the actual size of the file. There is a pointer variable named PTR of type float, then address of which type of variable the PTR will store in it float. ये एक subjective question है. When a pointer is incremented, then how many bytes will it move to change its address? Consider the structure. ये कोड है.
Write the code for declaring a customer type variable cust1 and assign a value 200 to the structure name member salary. फिर ये एक क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, अरे डिक्लेयर्ड है, ये अरे है, हाउ मैनी एलिमेंट्स इस अरे में होंगे, कितने होंगे। दूसरा है द डिक्लेरेशन ऑफ अरे इज चेंज टू, इसको अगर ये ऐसा बना दें तो हाउ मैनी एलिमेंट्स इसमें होंगे। फिर ये एक क्वेश्चन है, assume that you write a program to read the data from a file. You have two options to do either reading the data character by character, reading multiple lines at a time. Which option do you think more better? Write a program to prompt user to enter 10 values in an array. Program should be, it should sort the array in increasing order, find the maximum number in the array. Hint इसका दिया हुआ है, once the array is sorted, finding minimum and maximum value is very easy. ये एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम कोड, इस कोड की लॉजिक बतानी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पीटीआर इज ए कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर। ये इसका कांस्टेंट स्टैटिक पीटीआर सेमीकोलन। हाउ मैनी डायमेंशन डज एन डायमेंशनल अरे हैज n plus 1 डायमेंशन। मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे इज कॉल्ड बेस एड्रेस। While loop becomes infinite when the condition is always true. We want to access array in random order. Which of the following approach is better? Both pointers and array index are better. In C++, the hash include is called preprocessor directive. Assignment operator is used for assigning values to a variable. Programming computer simply means telling it what to do. Using a segment of source code again by adding a new functionality, so with slight or no modification in terms as code reusability, यानी कि दोबारा कोड को यूज़ करना, उसमें यूजबिलिटी। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन यू नीड टू चूज द ऑप्शन विच इज़ ट्रू फॉर द गिवन कोड। उसका आंसर इसमें से कोड में से बताना है इन तीन। सी इज़ ए फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। Dash and operator is used to pass the character address of a variable to another to the called function. In C या C++, there are 3 levels of scope for identifiers. What will be the correct syntax for the initialization of pointer PTR with string programming? ये पहले भी आया, character static pointer programming। C is widely known as a development language for Unix operating. In C++, the header file used for string manipulation is string.h. In C++, when two programs A and B are trying to open a file xyz.x at the same time, then internet open the file। अच्छा चलें इसको। dash is used to check for the end of file when a file is being read जब हो जाएगी तो end line आएगा, इसका ये end line आंसर है। फंक्शन write takes string and pointer reflector string variable length। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश, इसका भी आंसर नहीं लिखा हुआ। डैश नेम इंक्लूड द प्राइमरी नेम एंड ऑप्शनल पीरियड विद एन एक्सटेंशन। चलें इसको छोड़ दें। राइट द कोड टू एक्सेस द एलिमेंट एट थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम ऑफ ए 2D अरे uses pointer named array ptr। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फंक्शंस एज कैरेक्टर कन्वर्जन फंक्शंस एंड मैनिपुलेशन फंक्शन। इन दोनों का बताना है कि कौन सा कैरेक्टर कन्वर्शन फंक्शन और मैनिपुलेशन फंक्शन कौन सा। डिटरमिन द आउटपुट ऑफ द, इसके कोड की आउटपुट बतानी है। एग्जैक्टली ओपनिंग क्लोजिंग अ फाइल बाय यूजिंग ओपन क्लोज फंक्शन प्रोवाइड एडवांटेज बताना है ओपन क्लोज फंक्शन का मेमोरी यूटिलाइज, मेंशन द एडवांटेज। तो ये 5 आपके सामने मिड टर्म के पेपर आपके शो किए हैं, आप इनको तैयार कर लें कोड वगैरह, तो ये आपका इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।